I'm going to talk about the decreasing acceleration, and we'll talk about deceleration and then uniform or constant acceleration, right? So first of all, I'm going to talk about the decreasing acceleration. What is decreasing acceleration? For example, you have a car which was moving at a velocity of, for example, 0, ठीक है? और उसकी velocity अब हो गई है 10 meter per second. The time is 1 second, and the acceleration is going to be v minus u over delta t, right? Which is 10 minus 0 over 1, which is 10 meter per second square. ऐसे ही अच्छा, अब अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी 10 और अगले इंस्टेंट में 1 सेकंड में वेलोसिटी हो जाए 15 और आप यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें एज v माइनस यू ओवर टी, तो देखिए वेलोसिटी तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उतने रेट से नहीं बढ़ रही, मतलब 10 मीटर पर सेकंड नहीं बढ़ रही। अब ये बढ़ रही है 15 माइनस 10 ओवर 1, विच इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हुआ क्या यहाँ पे? एक्सेलरेशन हैज डिक्रीज्ड, इट हैज गॉन फ्रॉम 10 टू 5। ठीक है, समझ आ रही है? दिस इज व्हाट वी कॉल द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसमें देखिए वेलोसिटी बिल्कुल डिक्रीज नहीं हो रही, लेकिन इंक्रीज हो रही है, लेकिन कम रेट से। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज आती है डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। फॉर एग्जाम्पल, we have a car here and the initial velocity of the car is 0 meter per second. It traveled a certain displacement. The final velocity is 10 meter per second. तो यहाँ पे तो इसकी एक्सेलरेशन थी 1। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बताया था, राइट? यहाँ पे आपके पास, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये कार अगर चली जाए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाए 4, मतलब आपने ब्रेक्स लगा दी, ठीक है, आपने ब्रेक्स लगा दी है, टाइम है 1 सेकेंड, सो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी v minus u over t, which is 4 minus 10 over 1, which is minus 6 meter per second square. So this is what we call deceleration. Whenever there is a decrease in speed, as you can see, the acceleration is negative. So acceleration is minus 6, but deceleration is 6. Acceleration is minus 6 and deceleration is 6. Then we have uniform or constant acceleration. You have a car here, its initial velocity is 0, the final velocity is, for example, 5, time is 1 second, acceleration will be v minus u over t, which is 5 minus 0 over 1, which is 5 meter per second square. अगले इंस्टेंट में वेलोसिटी थी 10 और फाइनल वेलोसिटी चली गई 15 पे, तो अब भी आप अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वही आएगा। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन पहले भी 5 थी, अभी भी 5। We call this constant or uniform acceleration. Sometimes they'll ask you to define uniform acceleration. What you'll write is that the rate of change of velocity is constant.
The rate of change of velocity is constant and we call this uniform acceleration, right? तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म की एक्सेलरेशन है. हम लोगों ने एक बात की थी जीरो एक्सेलरेशन. We talked about decreasing acceleration. We talked about deceleration. ठीक है. We talked about increasing acceleration. ठीक है. डिफरेंट एक्सेलरेशन के बारे में हमने बात की है यहाँ पे. सब में फर्क है. And we talked about constant or uniform non-zero acceleration. Constant or uniform acceleration. ठीक है जी. I hope this is clear to all of you. Let us talk about the very important distance time graphs. Okay, and then after distance time graph, we'll look at the speed time graphs, right? Very important stuff. ठीक है जी. Distance time graphs. मैं आपको इसमें सारी possibilities बताऊंगा जो जो कुछ हो सकता है. You should know that distance time graph represents the distance traveled by an object. It is given by the distance traveled by an object. You should know that the gradient of the distance time graph represents the speed of the object. ये याद रखना है आपने कि हमेशा के the gradient of distance time graph represents the speed of the object. For example, I have something like this. This is the displacement. We have the time here. It's going to be like this. Let's see. मैं different possibilities बनाऊंगा यहाँ पे. This is A. This is B. C, D. This is E, right? So this S is for the distance. We have time here, and we have different sections that are involved here, right? मुझे बताएं A पे क्या हो रहा है. अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताऊं तो डिस्टेंस को क्या हो रहा है और स्पीड को क्या हो रहा है और एक्सेलरेशन को क्या हो रहा है. डिस्टेंस यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है. ठीक है. द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम. मतलब आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. So the distance is increasing uniformly with time. So if the distance is increasing uniformly with time, the speed is constant. इसका gradient constant है. Since the gradient of distance time graph gives you the speed, so speed is constant. And if the speed is constant, what's happened to the acceleration? Acceleration is speed constant है तो acceleration क्या होगी? Zero होगी. क्योंकि आपके पास A is equal to V minus U over T में अगर स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो आंसर तो 0 आएगा. आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी. जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी. ठीक है. सो एक्सेलरेशन is 0 meter per second square. You can write here A is equal to V minus U over T. So we have 5 minus 5 over T, which gives you 0 meter per second square. So this is what's happening at A. What is happening at B? अगर देखे जाए तो टाइम गुजरता जा रहा है, डिस्टेंस सेम ही है. ये 5 मीटर पे है तो 5 मीटर पे ही डिस्टेंस रहेगा. So object is at rest. Speed is 0 meter per second. Since the rate of change of distance is 0. ठीक है. And also if the speed is 0, the acceleration is 0. ठीक है. C पे क्या हो रहा है? Okay, so what's happening is that speed is increasing because the gradient is increasing. Although the distance is increasing non-uniformly, distance is
increasing non-uniformly. And what else is happening is that the speed is increasing. As you can see here, the object is accelerating. स्पीड जब भी बढ़ेगी ना तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा. हमें ये नहीं पता डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है या इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट भी हो सकती है. ठीक है, अब वो कैलकुलेशन से पता चलेगा. राइट. सो व्हाट्स हैपनिंग एट डी? When the speed is decreasing, the object is decelerating. I already told you, whenever there is a decrease in speed, see that it is decelerating. Okay? In this case, so what's happening is that distance is increasing non-uniformly. Distance तो बढ़ ही रहा है. देखिए distance तो बढ़ रहा है. And the speed is decreasing. Object is decelerating. Is that clear? E पे क्या हो रहा है? Object is at rest. So these are all the possibilities of a distance time graph. This is something that you'll see exclusively in distance time graphs. Okay. Speed time graphs. Speed time graph में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए the gradient of speed time graph gives you the acceleration. Speed time graph का gradient क्योंकि v minus u over t है तो delta v over delta t आपको acceleration देगा, right? Gradient of the speed time graph gives acceleration. So we have something like this. And we have velocity here. And we have time here, right? What's happening is we have something like this, of this sort, of this sort. And then we have something of this sort, right? This is A, B, C. This is also a curve like this. The C is also a curve like this. This is D. This is E. This is. You can see. So you should know that gradient of the speed time graph gives you the acceleration. So part number A is that speed is increasing uniformly with time. So this is acceleration. ये speed time graph है. Speed uniformly बढ़ती जा रही है. A में क्या हो रहा है? That speed is increasing uniformly with time. So this is constant acceleration. B पे क्या हो रहा है? Speed is constant. Whenever the speed is constant, acceleration is 0. What's happening in C? Speed is uniformly at an increasing rate. Increasing rate के साथ gradient बढ़ता जा रहा है. ठीक है? I'm going to write here that speed is increasing non-uniformly at an increasing rate. We call this increasing acceleration. We call this increasing acceleration. D पे क्या हो रहा है? Speed तो अभी भी बढ़ रही है. Speed is increasing non-uniformly at a decreasing rate. So decreasing acceleration, a gradient कम होता जा रहा है. So speed is increasing non-uniformly at a decreasing rate. E पे क्या हो रहा है? Speed is constant.
the acceleration is 0. What is happening at F? Speed is decreasing at a uniform rate. Speed is decreasing at a uniform rate. We call this constant negative acceleration or retardation. इसे deceleration भी कहते हैं. It's constant negative acceleration or retardation, right? आपको एक ग्राफ पढ़ने आना चाहिए. मेरे ख्याल में थोड़ा आइडिया हो गया. ठीक है? Exactly. The graph shows the speed of a car varies with time. Which statement about the acceleration of the car between 10 and 20 is correct? It's D. 10 से 20 के दरमियान acceleration 0 है, speed constant है. तो D आंसर है, D. उसने आपसे पूछा है कि 10 और 20 के दरमियान acceleration को क्या हो रहा है. देखिए ना, यहां से लेके यहां तक अगर आप देखें तो उसका ग्रेडियंट 0 है, तो acceleration भी 0 है. The graph shows how the speed of the car traveling in a straight line changes with time. Which section shows the largest acceleration? A. D is deceleration. B is also acceleration, but lesser than A. हाँ जी, A आंसर. ये आपको उन्होंने स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है फॉर अ शॉर्ट जर्नी. इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्पीड टाइम ग्राफ आपको नीचे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? स्पीड. तो इसका ग्रेडियंट अगर देखें तो इसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. इसका ग्रेडियंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. तो ये तो हो नहीं सकता. इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट ग्रेडियंट नहीं है. और इसका ग्रेडियंट तो 0 है, तो ये भी नहीं है. इसमें देखेंगे ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है. पहले स्पीड थी 2, फिर हो गई 4, फिर 6, फिर 8. ये पहले 2 थी स्पीड, फिर 4 हो गई, क्योंकि ग्रेडियंट आप निकाल रहे हैं ना. सी इसलिए नहीं हो सकता कि बेटा उसकी ग्रेडियंट एक कांस्टेंट लाइन बनेगी. अगर वेलोसिटी टाइम, अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का बनना था. इसका ग्रेडियंट एक कांस्टेंट लाइन है. ठीक है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, वो ये हो. लेकिन आपको ये चाहिए, उसके लिए आपको ये द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर represent the journey of a car. The dots separate sections of the journey. There are six different sections. How many sections represent the car moving with non-uniform acceleration? Non-uniform का मतलब है constant acceleration नहीं है, उसका constant gradient नहीं है. कौन सी होगी? एक तो ये होगी, इसमें non-uniform 2 points. ये दो होंगे. ये constant है, ये constant है, ये constant है.